ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में, और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। We welcome you to Bhagavad-Gita class. We are studying 4th chapter, verse number 20. कर्म के ऊपर विवेचना की। Bhagavan explained about karma, and he said that बहुत कठिन है it is very difficult to understand the tattva of karma. जो कर्म में अकर्म देखता है, One who sees akarma in karma and karma in akarma, Bhagavan said that such a person is wise. पिछले श्लोक में उन्होंने In the previous verse, पंडित शब्द से प्रबोधित किया। he said that such a person is pandita, दूरित हो गए हैं, यानी कि उसके मन में one कामना नहीं, who doesn't have any material desires to obtain anything, ज्ञान की अग्नि से उसके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, and his karma is burnt by the fire of knowledge. उसको बुद्धिमान लोग भी पंडित बोलते हैं। So Bhagavan said that even wise people call him a pandit, not just some sadhakas. होता है कि ज्ञान की अग्नि से उसके पुराने कर्म तो दग्ध हो गए हैं, ज्ञान। So here the question is
that with the fire of knowledge his previous karma लेकिन जो is कर्म वो burnt. अभी करेगा But अभी what about the karma ज्ञान that प्राप्त he करने के will बाद perform in the present तो उनका क्या होगा after obtaining knowledge? What about उनका those परिणाम तो karmas? भोगना पड़ेगा Will he have to और suffer उसको फल भी the मिलेगा results of those karma? Will he be become bound इसके by बारे that? में भगवान ये So श्लोक regarding कहते that, हैं यहाँ Bhagavan is speaking this verse. त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः जिसने कर्म और उसके फलों के प्रति समस्त Having आसक्ति renounced all त्याग दी attachment to action and its जो fruits, सदैव being संतुष्ट ever रहता है satisfied and और without किसी dependence कार्य on को नहीं others, होता such a वही person पूर्ण रूप does से nothing कर्म at से all, मुक्त होकर though विचरता है fully engaged in action. तो यहाँ विशेष तौर से ये बात कही है कि So कर्म here, अभिप्रवृत्तों especially, की Bhagavan is telling अभिप्रवृत्त माने सब प्रकार के यानी कि पूर्ण रूप से वो कर्म में Abhipravritta means fully यानी engaged. कि कर्म नहीं करता है संन्यास Not that he doesn't perform karma or he has taken इससे ये पता sannyas. चलता है कि यहाँ पर So from कर्म this we योग का also वर्णन हो understand रहा है that the संन्यास के topic being बारे में discussed here is karma yoga, not about sannyas. संन्यास का प्रकरण आ गया है The तो इसके sannyas बाद section will come कर्म up करते later. हुआ भी Here he is telling even पूर्ण रूप से while कर्म में doing लगा हुआ karma and not just doing karma, fully engaged in वो action, कुछ नहीं करता है still he doesn't इसके do ये कहने का anything. मतलब ये नहीं कि वो करता नहीं है Doesn't do anything does not literally mean he doesn't do उसका कोई anything, बंधन नहीं but है what it means is that he does not become bound by the karma. पहले कहा कि जो कर्म में अकर्म Not देखता doing है anything means what was ये explained जो earlier. कर्म कर रहा He है sees akarma in karma, लेकिन meaning he is performing कर्म karma, फल में but उसका बंधन नहीं बना because हुआ है he is not bound by the results ये of the इसी karma. प्रकार है जैसे वो कर्म ना कर रहा हो So it is as if he was नहीं not doing any भी action. एवकार कहा यहाँ पर एवकार संस्कृत में निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें किसी को कोई The शंका eva नहीं is होनी used चाहिए for used in the sense of certainty in Sanskrit, यानी meaning कि that there is no doubt नहीं whether he will be bound, not किंचित bound, मतलब बिल्कुल भी and kinchit ये means दोनों ही शब्द no doubt at all. एवकार और किंचित So eva इस and बात को kinchit निर्देशित करते हैं both indicate कि कर्म that पूर्ण रूप such से a त्याग देना person will be completely free from है karma कर्म करते हुए भी even while तो doing यही karma. विज्ञान जो है भगवान यहाँ इस अध्याय में वो देना चाह रहे हैं This is the knowledge that दूसरे Bhagavan अध्याय में भी wants यही to था impart कि in this chapter. चौथे में भी पांचवें में भी In the third also he यहाँ पर explained this, in the fourth also, then fifth बड़े also. जोर दे रहे हैं इस बात पर He is कि किस placing प्रकार lot से of कर्म नहीं emphasis on करके भी this कर्म point, के बंधन से how मुक्त to हो सकते perform karma and still उसका remain away जोर from the वो bondage कर्म of त्याग karma. पर नहीं है Bhagavan is not giving emphasis on giving up कि karma, कर्म करते हुए किस प्रकार आप but मुक्त रहें while performing karma, how to remain free. That is 18वें what he अध्याय is में explaining. भी इसी बात को कहेंगे Till 18th chapter also he will explain this, स्वेस्वे कर्मणि that how सिद्धिं लभते one can कि अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हुए कैसे perform karma according to his or her सिद्धि को nature पाता है मोक्ष को पाता and है still achieve कर्म बंधन perfection, से achieve मुक्त होता moksha, है liberation, तो इसी meaning को he भगवान doesn't become अगले bound अध्याय by में बता रहे karma. हैं और क्योंकि ये So बहुत Bhagavan जल्दी से speaks about समझाया this जा रहा many है times, and इसलिए because it is not थोड़ा understood विस्तार से easily, समझाते हैं that is why he श्लोक में explains अध्याय this में through उससे आगे वाले in में various उसी ways. बात को वास्तव में विभिन्न शब्दावली से वो कह रहे हैं He is explaining the same point using सारभाग different words. इन सब श्लोकों में The essence of these verses वो is यही है one त्यक्त only, फल असंग that कि कर्म में जो फल है उसमें असंग रहना the to remain detached from ऐसा नहीं the है कि कर्म fruits का of फल नहीं karma. आएगा It is not that you will not get the result of karma. If you perform karma, you will get the result, but not to जिसमें become जो attached to समस्या that, जो है वो आसक्ति से ही because होती है all the problems are due to attachment only. द्वितीय अध्याय में भी उन्होंने कहा In था the second chapter also he had explained. ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम तो आसक्ति जब हो जाती है So when तो उसी से attachment फिर happens, राग द्वेष then क्रोध due to that attachment, ये सब raga, चीजें dvesh, पैदा होती हैं attachment and aversion, and then यही moha, that is bewilderment, all this happens. So this is the इसको parampara of इसलिए समझा रहे avidya. हैं क्योंकि ये बात जल्दी से
समझ में नहीं आती है, Bhagavan is तो ध्यान explaining से सुन this, लो। and it is not थोड़ा easy सा to भी जो understand फल this, के no लिए matter how many times हम we प्रयत्न listen to बहुत this, करते हैं, because our prior experience has always been to work for result. उसके बगैर काम करना ये हमारी बुद्धि में Working without the desire for result, it is not इसमें easily बड़ी बात यह है understood. कि But कर्म का the और फल का point to reflect upon is वास्तव that में दोनों both स्वरूप karma से and जुड़े the हुए हैं। result both have nothing to do with our own ये बात swarupa. भगवान ने दूसरे अध्याय के बिल्कुल आरंभ में कही थी What Bhagavan कि हम told शरीर नहीं है, right in the beginning of second chapter, that और you are कर्म not जो this भी कर body, रहे you are हैं different उसके from लिए this body, and जो भी whatever हम we करते do, हैं it is all by the body वो only. भेद है, लेकिन Our है mind, senses, वो all हमारा part of स्वरूप body है। only. They are all our body only, and this is not our कर्म से swarupa. आप जो कुछ भी फल प्राप्त करते हैं और जो कुछ So भी आप whatever करते हैं results वो you बाहरी होता obtain, है, प्रकृति whatever के karma you do, it is outside your swarupa. भगवान ने कहा पहले Bhagavan told earlier जितने भी कर्म that हैं वो प्रकृति के द्वारा ही all होते the हैं, karmas which are there, they are done by प्रकृति prakriti के ही only, होते हैं सब कर्म सर्वशः, and prakriti is made of लेकिन gunas. उसको हम अपना मान लेते हैं। But we ये assume बात that it is our karma. तो वो केवल मानना ही है, So it is just in the mind that मानी we हुई think बात है, that it is वास्तविकता नहीं है। ours. It is not the reality. जैसे हमारे जितने भी यहाँ संबंध हैं Like whatever relations we have in शरीर के this साथ तो वो बने world हुए ही हैं, with each other, वास्तव this में is वो all in our फिजिकल mind. बंधन थोड़े ही है, There is no वो such माना हुआ है। physical level of relationship. It is और in the जब mind. मानने को छोड़ने के लिए जानना पड़ेगा, And if we have to give it up नहीं तो from the मानना तो mind, छूटेगा then नहीं। first we need the understanding, we इसी need the प्रकार जो knowledge. कर्म है ये Without होता knowing, है we cannot give it शरीर up. में, Similarly, और हमारे whatever स्वरूप से karmas बाहर are होता है, happening in the body, they are all outside our swarupa. They are not inside the उसमें swarupa. कोई कर्म नहीं होता है, There is no निष्क्रिय है, karma in the atma. अपरिणामी है, It is निर्विकार है। nishkriya. It is aparinami. It does not transform. वो अपना मान जब मान लेता है But तो when उसी से it समस्या होती है। assumes that this karma is mine, then the problem arises. तो So इसलिए ये सब because it is समस्याएं जो just हैं in the mind we think like that, और so जो it गलत we रास्ते can give it up only by understanding. There is no other way. आपके मन में बैठ जाए कि 2 + 2 = 5 है, If you think तो that 2 अच्छा plus 2 is equal to 5, काम suppose हो गया, due to some तो reason समझने से ही you आप think इसको this, छोड़ेंगे जब आप so समझेंगे कि then नहीं 2 + 2 you can give up = that 5 है। understanding only when you get the right understanding that 2 plus 2 is तो 4 इसी and not प्रकार 5. जो है ये Similarly, केवल मानी हुई बात है, it is just लेकिन ये this is just मानना in the इतना mind, गहरा बैठ गया है हमारे अंदर, but it is so deep rooted. इसका इतना It has अभ्यास हमको हो गया है become it has और gone इसको so जब deep. We एक have बार practiced it so many times that even तो after understanding, even after knowing, it becomes very ध्यान difficult to से give it ऐसा up. लगता है कि नहीं ये Due कैसे to illusion, we have this wrong तो इसी प्रकार understanding से that है how is जैसे it possible to work without शरीर attachment to हमारा result. बना हुआ है It is बचपन से, like from childhood, if you are wearing green colored जब spectacles, आप so उतार then देंगे you see everything is कि green, नहीं ये हरा and है ये suppose you cannot give it up, उसको and कैसे somebody उतारेंगे, says that no, it is not green, it is वो white. कहते हैं क्योंकि How आपको will you पता नहीं है। accept it? No matter how much one तो इसी says, प्रकार ये जो you will, अविद्या because है you are seeing it as green वो only. गहरे स्तर पर हमारे So चित्त this में बैठ गई avidya है has gone so deep कि in our ये chitta सुनकर भी that even सुनकर after hearing, उसको आप we do इग्नोर कर not देंगे। understand this. जो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा What Bhagavan said in the second chapter, even after hearing, और जब one does not understand this. जानने And का मतलब until and समझना unless है, you understand this, here understanding means experiencing. तो तभी ये छूटेगा। When you और experience, then इसीलिए only you will be भगवान able to इसको give up. बार बार यहाँ पर बोलते हैं And that's what Bhagavan is telling here again and again. और जब ये कर्म फल का संग छूट जाएगा तो फिर And वो when this attachment to तो नित्य karma phal will आदमी के अंदर एक go away, संतुष्टि then you आएगी, will always remain वो satisfied. जिस भी स्थिति में है उसमें संतुष्ट रहेगा वो। In whatever situation we are, we will नहीं remain तो satisfied. जब आपके अंदर कर्म फल की इच्छा रहेगी तो उसमें असंतोष रहेगा, क्योंकि जब तक Otherwise, when we will have attachment to the result of karma, we cannot remain satisfied. लालसा है, कामना है, Whatever desire you have, वासना जो है उसका मतलब ये एक
whatever vasanas you have. It's like यानी a कि हम अपने अंदर hunger. एक प्रकार का अभाव अनुभव करते हैं It's like a feeling of some deficit or scarcity in our life, उसे that पूरा I करने am के लिए lacking something and I want to fill up the चीज़ें gap, fill the gap. करते हैं। And in order to fill it, we और perform जितनी भी आप क्रिया activities, करते we हैं perform action. उससे जो So भी चीज़ें whatever प्राप्त we होती do, हैं whatever we attain through our वो actions, टेम्पररी होती है। those results are और क्योंकि attained at हमारे material शरीर level में only. जो चीज़ And because they आवश्यक are है at material level, उसमें whatever you दो obtain, चीज़ें आवश्यक हैं, उसके two दो things are कारण हैं। essential in that. एक तो जो भी प्राप्त करेंगे वो सीमित Whatever होगा, you will obtain, it will be स्पेसिफिक limited. होगा। It is not और जो possible to भी obtain प्राप्त something होगा unlimited. वो अनित्य And होगा। whatever you will obtain will be temporary also. It will not be eternal. और तीसरा ये है कि वो जो भी होगा And third point is that whatever you will obtain will be material. It will not be spiritual. लेकिन हमारा जो अपना स्वरूप है But our own वो Swarupa, चेतन स्वरूप है। it is spiritual. और उस चेतन की पूर्ति जड़ से संभव ही नहीं है। And it is not possible जो चीज़ to fill it जिस by वस्तु से something बनी है material. उसकी पूर्ति करने Any के लिए वो उसी वस्तु object, से उसकी whatever it पूर्ति is करती made है। up of, it can be उसके filled by किसी that अन्य only. तत्व से उसकी पूर्ति You नहीं cannot हो fill it सकती। by some other element. तो पहली बात तो ये है कि हमारे So first स्वरूप point में is that in our इस Swarupa, कामनाओं से जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं इनका whatever we want to obtain through these अभाव desires, हमने अपने ऊपर there आरोपित is किया हुआ we है। actually do not have any scarcity. तो This feeling of scarcity has been ये imposed ऐसा externally. संभव नहीं है कि चेतन वस्तु में It is not possible जड़ की कोई आवश्यकता पड़े। that anything spiritual will ever need anything material. तो हम सत हैं और सत We are का Sat, कभी अभाव and नहीं होता। there is never any abhava of विद्यते Sat. सतः, पहले भगवान ने कहा कि जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है और जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता है। And whatever is Asat, there is never any bhava of that. और जो भी हमको So all शारीरिक this चीजें body and मिलती हैं whatever is related to the body, उसमें whatever हमारा worldly स्वरूप भी objects we असत है। obtain, our relation with that is Asat. वो वस्तुएं तो हैं, Those objects are वो भी there, है, हम भी हैं, body is also लेकिन there, उसके we are साथ में also हमारा there, जो संबंध है but whatever relation we have with वो that, संबंध है ही that नहीं। relation is Asat, because that मैंने बताया relation कि ये doesn't हमारे exist मन का only. संबंध है, It is just in our वो mind. वास्तव में संबंध है नहीं। और क्योंकि There वो is no है नहीं, relation जो actually. चीज है ही नहीं उससे And if it आपको is not there, वास्तविकता क्या then प्राप्त हो सकती है। how can you attain anything real out of it? जैसे बकरी के गले में वो दो स्तन जैसी चीजें लटकी रहती हैं तो Hmm. उसमें से तो So दूध those मिलेगा नहीं two आपको। breast-like features that hang from the neck of goat, so you will not get और milk out उससे of that. आपको आपको दूध प्राप्त करना है लेकिन उनको सोचें कि ये स्तन है So if तो you उनसे तो आपको wrongly दूध assume प्राप्त that they नहीं are होगा। breast, you will not get milk out तो of ऐसे that. ही जितने यहाँ पर चीजें Similarly, हैं उनके साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं है और जब संबंध ही नहीं है तो उससे हमको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये असंभव है। और इसलिए कभी भी कोई इन वस्तुओं से तृप्त होता नहीं है, nobody ever becomes satisfied किसी की by these तृप्ति देखी नहीं objects. जाती है। जो थोड़ी We बहुत don't हमको see मिलती anybody है being वो satisfied. क्षणिक होती है, वो भी Whatever वास्तविकता में satisfaction प्राप्त नहीं happens, होती it है। is just लेकिन temporary. उस वस्तु It के is प्रति not हमारी जो कामना due है to वो objects. थोड़ी देर के लिए वो कामना It समाप्त हो is जाती है simply because और उसके our बाद वही desires, कामना there is दोबारा आ cessation of जाती है our desires temporarily. और उस कामना के कारण आपको अभाव अनुभव होता है। Due to क्योंकि those वस्तु आपको desire, when you मिलता have नहीं है desires, you feel some तो scarcity, वो कामना and समाप्त हो when जाती you है। get the और object, कामना then that समाप्त होने पर desire जो is कामना के कारण finished. अभाव की अनुभूति हो रही थी And when the desire वो is आपको finished, अभाव की then the अनुभूति feeling of नहीं होगी, scarcity that was वो आपका generated by that desire, that अभाव feeling is है। also gone. So just temporarily, it तो is आपको kind नजर of आएगा कि like you experience your swarupa and you feel वास्तव में उस some वस्तु की satisfaction. संतुष्टि नहीं होती है, So actually, you क्योंकि अगर have उस not वस्तु से experienced संतुष्टि satisfaction होती due to that object. तो हमेशा Because if that would have been the case, then you would have always जैसे felt मीठे में अगर satisfaction. मिठास है तो हमेशा ही चीनी को Like खाएंगे if नहीं, there is sweetness in sugar, जैसे you गर्मी should में always feel ठंडाई that. और
It is not that today you experience sweetness, next day you तो इसलिए experience अगर salty उन taste. वस्तुओं से हमको वास्तव में ही तृप्ति होती है So if those तो objects वो तृप्ति हमको will नहीं मिलती actually give satisfaction, then लेकिन that ऐसा should होता happen है always. कुछ देर But के it लिए doesn't तृप्ति happen. होती है यानी कि हमारी कामना समाप्त हो जाती है लेकिन फिर The satisfaction जो happens नया मन temporarily. में पैदा होता है Temporarily, some desires go away, और but after फिर some time again, there are new वापस आती desires. हैं And when there are new वही desires, स्थिति हो जाती then है जो पहले थी again, same situation, तो what you इसलिए experienced वास्तव में earlier. कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है That's why actually nobody is ever satisfied. क्योंकि हमने देखा है जीवन में कि हमारी कोई भी इच्छा रहती है जब वो इच्छा पूरी हो गई जब We वो have इच्छा seen पूरी that नहीं हुई when we have तब हो desires, जाएगी हम तब हम बहुत खुश हो जाएंगे when the desires are not fulfilled, we feel that on fulfillment we will be इच्छा happy. होती थी कि And when हम the इस desires are fulfilled, we experience some उसको happiness पूरा करें temporarily. पहले And उसको after that, again पूरा we कर have new उसमें desires. उसमें When मेरा we पास used to go to school, we used to think that ऐसा हो if we get first rank, फिर वो we will be सोचता है happy. मेरे को बढ़िया नौकरी मिल जाए And then उसके you लिए think that if I get good job, नौकरी then अच्छी you will मिल be जाए happy. नौकरी Then मिल you जाए get तो job and खुश become हो जाए happy. Now you feel that when I get married, I'll be happy. पड़ाव And then you get उसके marriage बाद also. अनुभव होती है तृप्ति थोड़ी देर के लिए So at every लेकिन वो stoppage, क्षणिक ही रहती है you feel some temporary happiness. बच्चे फिर अब And बच्चा then होता after है that, then there are children. Now you have to educate the वही children, get them married. कामनाओं का चक्र चलता So रहता है this cycle of desires नित्य continues. तृप्ति But here, what is said that वो nitya कभी भी tripti, everlasting satisfaction, that never तृप्ति का मतलब happens. होता है कि आपकी तृप्ति कभी समाप्त नहीं So होती nitya tripti means पूरा your होती रहेगी satisfaction will never be finished. करते हैं इसका So मतलब Sri Ramanujacharya gives an excellent meaning. नित्य स्वात्मनि एव तृप्त कि नित्य का मतलब आपकी आत्मा वो He नित्य says है here, Nitya means your Atma. Atma is Nitya, means to be satisfied in the Atma यानी अपने itself, स्वरूप में स्थित होकर तदात्म meaning स्वरूप अवस्थानम जैसे to be भगवान कहते हैं situated in the Swarupa, तो उससे तृप्त होना वही नित्य तृप्ति तो यानी कि जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं meaning होंगे as long as you do not आपको become पहचानेंगे नहीं situated in your Swarupa, you do not साक्षात्कार recognize yourself, when you do not become self realized, till then you will not इसलिए be आगे भगवान Nitya कहते Tripta, हैं you will not get निराश्रय everlasting satisfaction. कि आप जितनी भी बाहर की चीजें हैं So Bhagavan says उन that पर आश्रित whatever मत होइए external objects are there, do चाहे वो not कोई व्यक्ति है become dependent चाहे on कोई that. स्थान है Whether it is some चाहे कोई human समय being or है some place or some या कोई time परिस्थिति है or some situation, कुछ भी है whatever it is. उस पर अगर आश्रित होंगे तो आप If you कभी भी तृप्त नहीं हो सकते become dependent on क्योंकि that, वो then you will परिवर्तन never होता become रहेगा वो समय satisfied. बदल जाएगा Because आपकी जो if अवस्था it है you are वो बदल dependent on जाएगी a certain timing, आपका the time स्वरूप will बदल change. जाएगा आप किसी व्यक्ति पर आश्रित Youth होंगे will तो go व्यक्ति away. बदल जाएगा व्यक्ति की मृत्यु If हो you are जाएगी dependent on some person, that स्थान person may change, may स्थान में die. आपका कोई पद है तो उससे भी आप Place may पद also से change. If you have some position, post, that may also change. You may be removed इसलिए from जो that. ये चीजें हैं So, इन पर all अगर आप these things आश्रित which are होंगे there, if तो you become dependent on निराश्रय that, then this will be इसलिए the भगवान कहते हैं problem. निराश्रय So, Bhagavan और says, निराश्रय का मतलब don't ये नहीं है कि मेरा nirashraya, कोई don't be आश्रय नहीं है dependent on मेरा that. आश्रय प्रभु है इसके लिए भगवान स्वयं बोलते हैं So, गीता में nirashraya does not mean we do not have any ashraya. Bhagavan is our ashraya. कि मैं गति हूँ मैं भरता हूँ मैं प्रभु हूँ मैं सुहृत हूँ मैं सखा हूँ साक्षी हूँ और मैं शरण हूँ तो स्वयं वो बताते हैं इस बात को So, Bhagavan himself गीता says में that he is the shelter. वो स्पष्ट बोलते हैं कि In सर्वधर्मात्मक the end, in Gita, he tells very clearly, तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक हम किसी और वस्तु until and की unless we take shelter of Bhagavan, we keep taking shelter of वो some वस्तु other कोई भी हो object. सकती है That object may be और हमारा अपना अभिमान होने external लगता है हम or अपने it may अभिमान में be चले our जाते own हैं ego also. We कि may मैं सर्वसमर्थ हूँ मैं remain सब कर sheltered सकता हूँ under our own ego. I am this, I am that, I तो can वो do क्या this or झूठा है that. So, this is वो all सामर्थ्य है नहीं केवल false. कहने वाली बात है Nobody जिससे actually ये अनुभव has होता है कि any.
capability like this. And after some time, everyone realizes हम this. देखते हैं किसी Those who think they are very great, शुभ very होने वाले capable in बहुत any बड़ी field. इच्छा भी समय के साथ में समाप्त हो So, जाती है। with passage of time, their capability also खिलाड़ी हैं, reduces, goes away. धावक Great हैं, sportsmen, पहलवान हैं, runners, बॉक्सर्स हैं, wrestlers, उन्हीं boxers, को देखो जब वो see them, चाहे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, whether they have been उनका एक Olympic साल gold बाद medalists परिणाम or अवस्था whatever. वही रहती है। See what is their situation after जब 15 or मोहम्मद अली 20 निकल जाते years. हैं, They don't can't even मोहम्मद walk अली बहुत properly. बड़ा बॉक्सर था अपने ज़माने का, Muhammad Ali was a great boxer लेकिन उसको in his देखा youth, होगा, मैंने एक वीडियो but देखा था, you चलता see हुआ his पड़ा हुआ video था, in old age, even while walking, he गिर was गया, shaking. He could not even walk उस वक्त वो properly. अपने आप से चल भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा था कि जब वो बॉक्सिंग रिंग में होता था तो But there was a day सब when he लोग was in the boxing ring, he used to उसको jump with excitement. Nobody could stand in front of him. ऐसे ही हर विषय में है, लोगों की So स्मृति this है, is in every कोई field. बड़ा विद्वान समझता है Somebody कि thinks स्मृति he is खो very जाती है, intelligent, but if he loses his memory in the तो इसलिए old इन age, चीज़ों का आश्रय भी नहीं लेना चाहिए। so we should not take shelter of आश्रय जो है कोई all बहुत this, भारी वस्तु का ही नहीं होना चाहिए, because अपनी योग्यता का भी आश्रय लेना shelter चाहिए। is not just of external objects. We take shelter of our capabilities also. तो अभिमान तो We बढ़ेगा we ही, become very proud that we are very capable of doing this or अहंकार that, टूट जाता है। but that is also temporary. तो इसलिए हमारा That आश्रय ego जो है also केवल gets crushed. प्रभु है, So our shelter, our भगवान ashray है। is हम Bhagavan किसी only. किसी का भी आश्रय लेंगे Except Bhagavan, तो वो केवल anything that we अपमानजनक take होगा, shelter of will only give us suffering. हमको केवल कष्ट पाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। Because of that, we will only suffer. तो जितने भी सांसारिक आश्रय हैं उनका All the अंतिम worldly परिणाम, shelters that we have, their end result is only इससे मुझे suffering. ऐसा लगता है कि इससे मेरे को बहुत सुख मिल रहा है, मेरे बहुत अनुकूल है, Temporarily, you may feel लेकिन उसका that अंतिम परिणाम you जो are है getting lot of विषाद योग happiness, है। but its final result will always be suffering. Vishada 12वां Yoga, अध्याय है ना, वो भौतिक जगत में प्रत्येक आश्रय का the अंतिम yoga of परिणाम विषाद योग है। dejection, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा like है, that महान of लोगों first को, chapter of Bhagavad Gita. जिनके बहुत बड़े बड़े We have seen lot of बिजनेस हैं, great wealthy और people लोगों having की huge business जब वो ऊपर empires. जाते हैं तो At लोग the जो end, अपने they suffer. पारिवारिक लोग हैं, Their सदस्य हैं, own आपस में family झगड़ा members, करते हैं और उनको they कोई fight सुनता नहीं है। among themselves and nobody listens to them. तो जब तक आदमी Nobody listens to सांसारिक this old man. वस्तुओं का आश्रय लेगा So, तब as तक वो long as दुखी you रहेगा। keep taking shelter और of ये worldly सांसारिक objects, आश्रय you वो will suffer अस्थाई हैं, because और these worldly shelters, they are ऐसे ही temporary, they are limited. आपकी वास्तव में सारी आकांक्षाओं को पूरी भी नहीं कर सकते हैं। जीव They गोस्वामी cannot एक actually बात कहते fulfill हैं कि all जब your आपको desires. कोई Sri Jiva Goswami makes one ऐसा point. He महान says आपके that ऊपर कृपा करता है, if a person is कृपालो not दयामय capable, but दुःखाय एव he gives कृपलते, you mercy तो उसकी कृपा or का he फल is क्या है? compassionate towards you, then वो that कृपा compassion से or mercy will also bring suffering जो नहीं only, चाहता वो दे नहीं सकता है, जो आप because नहीं he is चाहते not हैं वो आप capable कर नहीं सकते हैं। and he cannot do anything for you आप actually. सोचेंगे कि So इससे he मेरे will को कुछ suffer, प्राप्त हो जाएगा, वो and कुछ you think that I will get something out of आप him, दुखी रहेंगे। something from him, you will also कृपालो keep suffering. असमर्थ से दुःखाय एव कृपालता, दुख ही उससे मिलता है। और So you अगर will only समर्थ get व्यक्ति है, dukkha out of it. समर्थ And if से he is a capable असमर्थ person, से सुखाय एव कृपालता, तो समर्थ तो केवल एक भगवान ही है, प्रभु actually समर्थ। only Bhagavan is all capable. इसलिए उन्हीं के समर में शरण में जाना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान जो कहते हैं कि Bhagavan उन्हीं की शरण says आप सर्व भाव से, पूर्ण भाव से सब कुछ समर्पित करके that उन्हीं की with शरण में Purna जाना। Bhav you should take और his किसी की shelter शरण में only. आप अगर जाएंगे If you take any shelter of anyone तो else, समस्या ही होगी। then you will और only यहाँ encounter गीता में भी problems. हम देखते हैं कि So अर्जुन here ने in Gita भगवान की शरण also ली, we see that Arjuna took shelter of और Bhagavan, दुर्योधन ने and अपने आचार्य Duryodhan, सेना और अपने जो भाई बंधु कर्ण दुशासन उनकी शरण ली, तो परिणाम सामने ही है, he took shelter of his विजयी हुए, brothers Karna, और सब कुछ खत्म हो Dushashan. गया। So we know the result. तो ये हमारे सामने Duryodhan lost everything.
उदाहरण है। So we तो see ऐसे this लोग में क्या example होगा जो in Mahabharata. सब कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देगा, So such a होगा person निराश who will give up attachment तो to वो karma ऐसी phala, स्थिति में to the results of actions, and remains detached, and in such a state of mind, इसलिए whatever कर्म जो है karma he वो does, his karma is to be treated as akarma only. उन्होंने कहा कि कर्मणि अकर्म What Bhagavan said in Gita earlier, कर्मणि च कर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्स्न कर्म कृत, उसी का यहाँ पर विस्तार से what Bhagavan said, वर्णन भगवान that is what he is विस्तार explaining here in detail. He is expanding on that concept he told earlier. तो ये व्यक्ति कर्म How to करता see है akarma in karma. So this person he performs karma, और but his दूसरे karma व्यक्ति is जो akarma इस only. प्रकार नहीं है, जो And the निराश other है, person who is not वो अगर कर्म नहीं भी करता है this, तो भी उसका कर्म बंधन ही हो रहा who है, is attached, क्योंकि even if he is not doing anything, खाता भी still है whatever he does और will उससे भी bring attachment. Even while he is eating food, कुछ नहीं that will also lead to suffering. सांस भी लेता है तो उससे भी उसका Even when he is breathing, that is also going to अगर cause सांस नहीं bondage, लेगा तो because if you are not doing उससे anything, भी at उसका least you बंधन will breathe, that will also lead to bondage, because he is still indebted, he has to pay off the इसलिए debts. भगवान That is why कर्म here में कर्म Bhagavan कैसे is होता है इसको थोड़ा explaining, he is teaching बताया है, how to seek इसी को akarma in karma. थोड़ा और तरीके से आगे Now बढ़ाते this हैं same point he is now कि किस explaining प्रकार in से more detail in व्यक्ति the next verse. How थोड़ा निवृत्ति परायण हो जाता है कि ज्यादा कुछ नहीं करता a है, person becomes nivritti parayan, केवल means he goes towards शरीर the रक्षा के लिए nivritti इतना ही कर्म marg, करता है, तो meaning he उसको performs कहते हैं action just for maintenance of body. सुतात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, जिसमें भोग की Translation: लालसा नहीं है, devoid of craving for जिसका enjoyment, मन और being शरीर controlled in निग्रह है, mind and body, जिसने and सत्य having असत्य relinquished all व्यवहार में sense of स्वामित्व बुद्धि को proprietorship प्राप्त किया over है, all objects of ऐसा enjoyment. व्यक्ति केवल Such a शरीर के person निर्वाह does का not incur कर्म sin, करते हुए भी even while engaged in action, भाव में लिप्त simply नहीं for होता। maintenance of the body. तो जो पहले श्लोक में कहा गया था त्यक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्तो So, निराश्रम, what was told in the previous उसको यहाँ verse, थोड़ा और दूसरे he is प्रकार से वर्णन करते हैं explaining that here. कि He is explaining same point in a little different way. जो बोला त्यक्त्वा कर्म फला संग, तो उसका यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो निराशी है। So here he is तो explaining how that person who is निराशी devoid इसलिए of attachment to result, he is nirashi, कोई आशा नहीं means रखता है। he is devoid of निराशी craving. का मतलब कामना। Asha means kamana, desire. भागवत में Like in Srimad Bhagavatam, वचन आता है it is said आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा एक जीवन में that रखना कि जब ये सब हो desires जाएगा or तो मैं सुखी craving, होऊंगा, that when such and तो such वो thing will happen in life, then I will be संस्कृत में जो happy. आशा शब्द That दिखाई is देता called है Asha. In Sanskrit, Asha also means Disha, direction, उस तरफ दृष्टि रखना, meaning to तो always आशा का मतलब है कि भविष्य के लिए have the vision focused in the future, वर्तमान में नहीं जीना। always living in the future, not in the present. वर्तमान में तो हमको सब अभाव ही दिखाई देता है, वर्तमान में हमको सुख In दिखाई the देता है, present, we see scarcity, इसलिए abhava यहाँ only. कहा नित्य तृप्ता, What was told in the वो previous भगवान की verse, बात है Nitya Tripta, कि वो संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। that is about और जो आदमी present, आशा में and जीता है the वो person असंतुष्ट who है, तृप्त lives है, with इसका अर्थ है कि वो desires, वर्तमान में ही he is स्थित है, dissatisfied, he is वो not living हमेशा in the सोचता present, है कि कल he मुझे always thinks about future, सुख प्राप्त होगा, he अच्छी always चीज thinks that होगी, I will get sukha, अभी happiness मेरे tomorrow. अभाव है और ये समय बदलेगा, फिर अच्छे दिन Currently I आएंगे। am going through a bad phase of time. तो इस तरह बहुत लोग अपने विचार रखते हैं भविष्य के बारे में। So like this, many people think about their योग future. योगी ऐसा नहीं सोचता है, कर्म योगी जो
So this person doesn't think like this. वो अभी वर्तमान में ही तृप्त रहता है, ऐसा नहीं कि भविष्य में मेरे को तृप्ति He मिलेगी, remains satisfied in the present itself, not that he thinks या that मेरे को he'll get satisfaction पद in प्राप्त हो future. जाएगा, या ये वस्तु So his प्राप्त हो जाएगी, satisfaction doesn't depend या on इस getting तरह some लाभ मिल post in जाएगा, future or मैं some वहाँ चला जाऊंगा, इस तरह relocating to some place in तो future. मेरे को आनंद मिलेगा। Then I will कुछ be लोग happy. अपना देश Some छोड़ के people दूसरे think देश like जाना that. चाहते हैं कि उनको वहाँ पे कुछ अच्छा They अवसर want to मिलेगा, relocate to some other ज़्यादा country. धन कमा सकेंगे, There विदेश you में can सेटल earn हो more जाएंगे, wealth. तो उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं So they have कि इस विदेश all में these मेरे को जाना ही जाना desires. है, I have to go to some उसके foreign लिए वो country बहुत and सोच there रहे I have रहते to हैं। earn lot of I can earn lot of तो money. So their ऐसे mind सोच के is वहाँ जा करके focused on उनको that only. सुख आनंद मिलेगा, And they think लेकिन वो that क्या करते after हैं, going there I will get lot of वहाँ जो लोग happiness. रहते हैं ना, But then the point वहाँ जो is लोग people are रहते हैं living वो there क्या करते हैं, also. So first you should check the people who are ऐसा तो staying there, are they कोई happy? देश ऐसा हो कि वहाँ के सब लोग So सुखी it हों, is not that there is no such country where all the citizens are happy. That is not तो आप possible ऐसा anywhere. सोचते हैं कि आप वहाँ But you think like this, अब वो बात अलग है कि आपकी that स्थिति after relocating there ऐसी you है will become happy. Now वहाँ it से is वहाँ possible जाके that compared to कि your आपकी present स्थिति situation, ऐसी है you may be in a better financial कि position if you वहाँ go there, you may have a bigger बहुत home कुछ सुविधाएं आपको मिल or you सकती may हैं, have better साधन मिल सकते हैं, facilities. All that is possible. लेकिन उनके कुछ समय बाद But में वो आपके लिए साधारण हो जाएंगी, after some time they will also जब आप appear उनकी ordinary तुलना for you. दिन तक आपकी This स्थिति में comparison करेंगे, that you are making, तब आप it will last in your memory सोचेंगे कि only for यार a जब short भी period of आप इस time. स्थिति में रहेंगे तब तक आपको थोड़ा As आनंद long मिलेगा, as you are staying there लेकिन ऐसा keeping लगेगा the कि आप कैसे previous उनको आनंद state दें, of ध्यान रखें, life in memory, till then you will keep comparing तो and ऐसा you लोग may feel हैं happier, but that also will fade away. जो समृद्ध देश के निवासी हैं, And also वो there are अगर such इस देश people, में चले जाएंगे तो वहाँ हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग सोचते हैं ना, हमारे भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं कुछ many विदेशी people think like this about India. ऐसा Foreigners, they सोचते think हैं about India, they think that in India people are very poor, लेकिन क्या they बात पता are चलता है, suffering. But the point is everyone suffering in India? It is not हो like that. सकता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा सुखी हों वहाँ की बजाय, Maybe the people here are क्योंकि much वो सुख happier पे compared to people there, वास्तव में बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, because लेकिन बहुत this लोग तो sukha, बाहर की happiness, does वस्तुओं not से depend on external डरते objects. रहते हैं डरे हुए, But many foreigners, they feel बहुत scared to सुखी come हैं, to India. लेकिन Their situation is जो very यहाँ पर bad. रहते हैं या जो रह रहे हैं वो तो ऐसा नहीं But सोचते, those who are वो coming यही here, those who are staying सोचते here, हैं कि they don't think भारत की like दृष्टि this. से ऐसा होता है जब हम तुलना So it करते is हैं just a comparison. अपनी स्थिति से दूसरे स्थिति की, तो ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी है, उनकी When we स्थिति compare बढ़िया our है, present इसलिए हम ऐसा situation with सोचते हैं, others, then लेकिन we जब आप feel इस that तरह our सोचने situation लगते is हैं not good. तो तुलना The को other one स्वीकार is in a करना better situation. But when you थोड़ा change your मुश्किल मानने situation, लगते हैं, so for उस small period of सिचुएशन time को you may feel happy. But then what वो जो happens? You become सिचुएशन used पहले to that आपने महसूस situation. किया था वो आपको That साधारण same लगने home, लगेगा, what you felt earlier that it is very वो big, धन जो now आपने it appears पहले ordinary to you. वो धन जो पहले आपको लगा था कि मेरे को बहुत अच्छा The मिल wealth रहा है, that you have, तो ये एक you are नॉर्मल feeling हो that जाता है, I got lot of तो wealth. धीरे Now धीरे that करके becomes आपके मन में ordinary for you. Now you want even more. धनम एव विवर्धते नई जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमय एव पुनरेव विवर्धते, तो आपकी कामना जो है ना वो शांत होती नहीं है, So your desires actually उसमें don't become रहती है satisfied. निराशी, और निराशी का मतलब है कि ये अंदर वाली वस्तु का That's why त्याग है, Bhagavan says Nirashi, meaning और devoid of the craving for है enjoyment. कहा, तो Here त्यक्त he सर्व said परिग्रह Tyakta मतलब Sarva बाहरी Parigraha, वस्तुएं meaning सबका, the external objects to give them up. निराशी का मतलब अंदर And वाला, here Nirashi means to give up त्याग the दो प्रकार का है, internal त्याग one. के जो अंदर में Tyaga is of two वासनाएं हैं, types. One कामनाएं हैं, is इच्छाएं the हैं, vasanas, the desires और that you बाहरी जो have वस्तुएं within, हैं, to give them up. And the other बाहरी is वस्तुएं, the external objects, worldly objects, to दोनों give के them लिए up. यहाँ बताया गया है, So अंदर here के लिए कहा both are निराशी referred. और For बाहर the के लिए internal one, Bhagavan is telling त्यक्त सर्व Nirashi, परिग्रह, and for the external one, Bhagavan is saying Tyakta Sarva Parigraha. और जब आपकी
निराश And कब रहेंगे आप? when you become nirashi, में कामना नहीं होगी तो फिर ये meaning you do not have desires within, फिर आपका चित्त then यानी कि मन, आत्मा, इंद्रिय इत्यादि your chitta, meaning पर your आपका mind, नियंत्रण हो जाएगा। senses, etc., you will achieve जब self तक control कामना over रहेगी them. तब तक आपका मन नियंत्रित नहीं As होगा। long as you जिस have प्रकार की कामनाएं desires, होंगी your mind वैसे cannot मन be आपका चंचल रहेगा। controlled. The more you have desires, the यही more your यही mind will keep कामनाएं हैं, flickering. यही मन को चंचल These बनाते हैं। desires that we have, they make अगर the कामनाएं mind कम होंगी very chanchal or तो मन शांत flickering. रहेगा। If जैसे desires are not there or less, then mind will be peaceful. तो उसके मन में कोई कामना Like होती नहीं है, an infant जो baby, होती है उसको तो यही it doesn't have any कामना होती है कि desires. मुझे He खाना is है, just मुझे ये hungry, चाहिए। he just wants the food, that's all. वो केवल वही कर्म करता है जो शरीर संबंधी है, His भूख, actions are just related सोना, to the basic पानी, needs of body, मलमूत्र इत्यादि। hunger, इससे ज्यादा तो बच्चा, छोटा सा तो कुछ etc. करता नहीं है। The infant baby और doesn't उसके do मन anything में more than this. He doesn't have any other कोई इच्छा desire नहीं है, because he doesn't have any इसलिए such वो सुखी है। capability. So he तो वो remains अविद्या के peaceful. कारण है। But that is due to avidya. अविद्या का इतना प्रभाव है, उसकी इंद्रियां जो है वो विकसित नहीं Avidya हुई is हैं, so उसकी powerful बुद्धि that अभी इतने विकसित नहीं since हुए हैं, उसको the कोई अनुभव नहीं है senses have not developed now and he संसार का। doesn't have any worldly तो इसलिए उसे experience, विषयों के that is प्रति why इच्छा भी नहीं होती है। he doesn't have जैसे any जैसे सोता है वो desires अपने towards मस्त the रहता है, sense objects. That's why उसको the कोई दुख या baby नींद नहीं is आती है, happy in शांत himself. रहता है, If उसको he gets his किसी sleep, की if he is चिंता getting his फिक्र food, नहीं he is रहती just है। not bothered about anybody or anything else. He doesn't plan about anything. लेकिन वो तो केवल एक अविद्या की स्थिति है। यहाँ पर जो बता But रहे that हैं is just a state of avidya. Here, ज्ञानी, what Bhagavan is telling is about the jnani. ज्ञान की स्थिति में पहुंचकर ऐसा होता है। फिर Reaching a state of jnana, बच्चे की there तरह you become like a जो child. सिद्ध पुरुष होते हैं, That's why it is said शिशु बताया, that the Siddha Purushas, बच्चे की तरह they are मिलता है। also like ऐसा नहीं children. कि बच्चे की तरह वो अज्ञानी होते So, हैं, like being like children does not mean that they are fools or they are they do not have gyan. चलता रहती But है, the meaning is like चित्त uh, शांत रहता how है, a child, तो his उस प्रकार chitta वो is satisfied. So the Siddha Purusha, his इसलिए chitta is also like a satisfied तो and इसीलिए stable like यहाँ that पर of a शब्द प्रयोग child. किया यत चित्तात्मा। So for that Bhagavan is using this word. तो उसके मन में फिर कोई कल्पनाएं नहीं होती हैं, So then he does not have any बड़े other महल खड़े नहीं uh, करता है। desires in the mind. He does not नहीं तो हमारा keep मन creating mansions or palaces in his mind. कल्पना में लगा रहता है, Otherwise, our mind is कल्पनाएं always करने in a state of विषयों के imagination प्रति to get this or that. कामना के कारण। और दिन में भी कल्पना करते हैं, रात को सोते हैं तो And उसमें भी we do daydreaming and we dream at the night also. उन We कल्पनाओं में ही keep खोए रहते हैं। imagining and we are always absorbed in our इस कारण imaginations. वो That व्यक्ति is why वर्तमान में नहीं जीता है, such a person does not live in the इसलिए present. He always lives in the future due to these तो ये जो imaginations. यतचित्त आत्मा है, ये व्यक्ति जो निराशी है So this वही है person who is Yata Chitta Atma, who is Nirashi, जिसको जितेंद्रिय who is होना devoid of craving for enjoyment, only he is भोजन happy. करना और उसके He विषयों से has न control over his निवर्तन senses, करना, and of that also most important यही is संभव है to control the mind. जब So वो this is only possible विषयों के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाए, उसके मन when his attraction to sense चित्त objects में, has gone away. तो फिर वो हर चीज में जागरूक रहता है। So he remains aware in everything. अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं Whatever we पूरे do प्रकार से in our सोते life, हुए, कल्पनाओं we में are doing as खोए if हुए in करते a हैं। state of sleep. Sleep in the sense that we are absorbed in the world of our imagination. We do not perform actions out of awareness. लेकिन You भोजन are कर eating रहे हैं, food, but दिमाग कहीं और घूम रहा है। mind is wandering somewhere else. क्लास में बैठे हुए हैं, You're sitting in मन कुछ और class, कल्पनाओं में but mind is absorbed in your imaginary ऐसा world. होता है। जब करते हैं तब तो और We ज़्यादा sit चलता for है, japa. सबसे There, ज़्यादा। the mind does maximum imaginations, as if mind gets 10 times more power during ज़्यादा भले japa. चले, लेकिन जब आपका In जप the करने का समय for आता other है activities, mind is not so तो active, बाकी सब but चीज़ें when भूल it comes जाते to हैं, doing japa, आकर्षण लग गया
then as if the mind has got an injection of a special tonic, and then it becomes extremely powerful during japa and it runs at maximum ये speed. उसका मूल कारण हमारी So कामनाएं what हैं, is the main reason behind that? कामनाओं की Reason is पूर्ति के लिए जो our आसक्ति kamanas, होती our है, desires, our attachments और to the आसक्ति desires, से वही our हमारी attachments to the इच्छा बनी results, रहती है। that only क्योंकि keeps our भक्ति mind का मतलब है कि wavering here जैसे and जैसे there. इंद्रिया हमने Japa means that I have left उसके everything लिए थोड़ा and समय now निकाल कर I उनके am ध्यान को केंद्रित किया, focusing my mind on उसके बाद Bhagavan for whom I have taken out वो कहता time. है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या But होगा। the mind thinks that if you do like this, then what will happen to me? बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, Like when children तो they grow, एक पैदा होता है तो some vivek वो arises, अवज्ञा and करना चालू कर देते हैं, then they start disobeying the वो parents. दिखाना चाहते हैं कि हम But भी they ऐसे also हैं। want to show that we are इस also प्रकार से something. ही मन करता है, वो दिखाता है तुमको कि ऐसे कैसे हो जाएगा The कि तुम mind also behaves like this. छोड़कर और यहाँ पर लग That जाओगे। how can ऐसा you होना just चाहिए give me up and कि focus मैं इन on विषयों में लगा japa? हूँ, और I अगर have तुम मुझे always been हटाना चाहते हो absorbed in these sense objects. तो Now you निराश हो want to जाओगे। make me rid of all that. So mind ये doesn't बहुत like this. चुनौतीपूर्ण है। It is filled with तो desires. इसलिए हमें अभ्यास करना है कि जो भी कार्य That's करें why we have to do उसमें abhyas, do practice. That whatever we do, we should do it रुचि से with ना करें। awareness, नहीं तो not क्या होता है कि जिस चीज़ not की being आदत पहले लग unconscious. जाती है Otherwise, what तो happens वो is when you दोबारा से become उसको habituated for doing उसमें कोई anything, बुद्धि लगाने की तो जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि so सोच we के are करेंगे कि नहीं anyway हाँ भाई eating ऐसा food, so you ऐसा don't have to करेंगे, plan for that. हमें That I have to टाइप plan, I have to करना है put my hand there. पहले Like टाइप suppose करके you फिर are देख typing देख कर and you करना है। are doing typing for the first time, you see every letter and then you जब press उसका the key. अभ्यास हो जाता है But तो when you धीरे are धीरे अपने आप used to बुद्धि that, चली जाती है। then even without क्योंकि seeing, शुरू में तो your बहुत कुछ fingers चीज़ों का move हमें towards the अभ्यास perfect करना key पड़ता on है the keyboard. और बाद में सब अपने आप So चलता है। initially you have to focus on that, and after that it बार runs बार in auto बैठे mode. रहें, टाइप भी करते रहें, Even while talking, you can keep गाड़ी भी doing चलाएं तो typing. फोन पर भी बात कर लें। You are, let's say, driving and you are talking on the phone उसमें से हमारी also. फिर जागरूकता हट जाती है, So then what happens? We lose our उसमें awareness मनमानी from that activity and we start planning for doing something else on निराशी only. चित्तात्मा But such होकर a बैठ person जाते who हैं। is nirashi, who is devoid ऐसा of craving for enjoyment, he always ऐसा works नहीं as करते if हैं, लेकिन like जो कार्य someone करना है who वो is अपने typing for पूर्ण the first निष्ठा time. से वो करता है। उसी प्रकार से उतनी जाग ऐसा नहीं है कि वो टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं बनेगा, लेकिन उतनी जागरूकता से ही रहता है वो। It is not that he will not be expert in typing, but he is always aware about everything that he is doing. His mind is not wavering here and there. जागरूकता से ही करता है। Whatever actions he और performs, he त्यक्त does it सर्व with full परिग्रह, awareness. तो त्यक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ So छोड़ देगा, tyakta sarva parigraha, tyakta does not mean that he will रोड give पर up चलता हुआ नहीं everything. चलेगा। ऐसा नहीं है कि सड़क पर बैठ जाएगा सब कुछ छोड़कर, अपना It मकान is not that he will give up everything and sit on the जो राशन roadside. कार्ड है उसको भी किसी को दे दे, ऐसा नहीं है। तो सर्व परिग्रह त्यक्त का मतलब है कि उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, What it means is that he does not have attachment to क्योंकि that object. समस्या आसक्ति की है Because the विषय main वस्तु की नहीं problem है। is with attachment, not with the sense object per se. विषय वस्तु तो राजा जनक के पास भी थी, Even King Janaka had lot of उसमें sense आसक्ति नहीं objects, थी। but he did not have any attachment towards them. तो इसलिए जनक ने कहा था कि अगर ये पूरा राज्य भी जल जाए तो मेरे को कोई That's फर्क why नहीं Janaka पड़ता। had किसी said को चाहता that है कि even if नहीं this whole मेरा kingdom ऐसा gets राज्य जल burnt, जाए, it doesn't matter to me. That does not mean that he wants that. उसके He मन doesn't में want कुछ भी that. But even if something happens, his chitta will not be हो disturbed गया तो उसमें वो क्या कर because what सकता has है। happened has happened. He can't do anything about it जब now. आसक्ति होगी तो आदमी रोकर बैठने लगेगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं मर गया, But when मकान asakti टूट गया, attachment is सब there, कुछ the टूट गया, person will sit crying that now I lost ऐसा नहीं everything. है। What will I eat? What will I drink? He तो starts thinking like this. आसक्ति का त्याग करना ही यहाँ पर So, त्याग शब्द का अर्थ है। uh, here कोई चीज tyaga, लेती होगा, giving up means to give up the कुछ attachment चाहिए, only. कपड़ा चाहिए, Because every जूता person he चाहिए, wants, he तो has some सर्व basic needs: सर्व home, मतलब है उसको clothes, भी छोड़ना है, food. तो फिर जीवित कैसे So रहेगा। sarva means everything. If he gives up everything, how will he even survive? भोग बुद्धि का त्याग करना। So what it means here is तो to ऐसे give up विषयों the के में enjoying mentality from these sense ये सब objects. भोग्य हैं। Not to think that I am the bhokta, I am the जिस विषय enjoyer, में मैं these are meant for my स्वार्थ enjoyment. हूँ,
see everything क्योंकि as सेवा if में how लगे it can be used in the service of Bhagavan. और जो भी जिसको भी आप अपना मानते हैं, जिस पर आपका अपना स्वामित्व है, Whomever you consider that उसको is इस तरह से yours, you have some rights over that person, some power over that person. So to see that this person has been sent by Bhagavan and he is meant for Bhagavan's seva only. So if you बाकी have this mentality, then you will not become bound by these objects. दैववश किसी वस्तु की हानि हो जाती है So किसी by चीज की Daiva, हानि हो even if जाती है, some object is lost or some person dies, तो ये देखना कि जैसे so भगवान just see भेजे that तो how Bhagavan sent that person, now he has taken him किसी or का her जन्म back. होता है तो हम खुशी मनाते Somebody हैं, is born, we किसी celebrate. का दुख उठाते When हैं, somebody dies, लेकिन वास्तविक तो we ये है कि जब जन्म हुआ suffer. तो सोचो कि But भगवान the ने fact दिया is है तो that खुशी है। when the birth happened, you think that Bhagavan sent him or her, भगवान ने ले and लिया, on death, Bhagavan has taken him away. Bhagavan gave his ऐसा नहीं property, है, he has इतने taken him सालों का away. संबंध था, इतने सालों का And for प्रेम this था, certain time period, we have had some अज्ञानवश relation with that person, तो इतने or सालों के maybe a प्रेम से relation to pay कहानी off समाप्त हो previous जाती है। debts, and now that relation तो is इस finished. दृष्टि से सर्व परिग्रह है, तो परिग्रह दो प्रकार के हैं, एक बाहरी और So एक from this अंदर। vision, Sarva हमारे मन में Parigraha, वो कामना we है give up कि everything, हम external as well as सुखी रहें, internal. Internal is our और desires or बाहरी our understanding of relations, संबंध। and external is all तो these sense objects. इसलिए So जैसे this is बैंक why का just like क्लर्क होता है, a bank clerk, तो वो धन में व्यवहार करता है, उसके पास में धन he होता है, लोग deals आते हैं with पैसा wealth, जमा करते हैं, he has money, people come, they और deposit उसके money in the bank. आगे आके So suppose somebody सब comes and मंदी deposit होती 10 है, lakhs, so आकर the clerk is not पैसा elated with निकालते that. हैं, If somebody तो takes दुख 10 lakh होता है। out of his account, the clerk is not उसके पास में पैसा suffering. ज़्यादा है कम है, इस सब उसके ऊपर कोई This प्रभाव नहीं does पड़ता, not make any वो difference ये to the जानता है कि clerk इसके whether पास ज़्यादा the पैसा है, तो मैं bank क्यों customer, इसका एक what he रुपया has more money, less नुकसान money. उठाऊं। This is he considers भगवान himself व्यवहार just के like लिए a trustee. He दिया is हुआ है कि कोई आए protecting that money, तो वो सही and है, he तो has उसको been जितना given पैसा a देना है उतना job पैसा ले लो। that when somebody comes, either you deposit इस that प्रकार money की or you withdraw it. कि हमारे पास So जो भी है वो similarly, व्यवहार के लिए we should also think like that, that whomever we have in our life, whatever we have, it is all for vyavahar, for using जिनके पास में in हमारे Bhagavan's seva. कुछ आ जाए संपत्ति, If you get तो something उसको हम more ले लें तो उन्हीं का ही है, or Bhagavan takes इसलिए away इससे हमारे something from हृदय you, में it is all his only. ना प्रफुल्लता हो, So आनंद in हो, our heart, we neither और ना become हो जाने पर। elated, तो we ये don't become excited, or we don't plunge into suffering when we इससे lose हमारी that जो object. मन बुद्धि है वो नियत रहेंगी, वो So if we are in this state of mind, नियंत्रण में then रहेंगी। our mind will be self-controlled. तो इसलिए भगवान That's why कहते हैं, Bhagavan is explaining here. और इसके बारे में And regarding आगे this, जाके he कहेंगे, speaks many times. He will श्लोक speak के later माध्यम से also वर्णन करेंगे। श्लोक when he के will माध्यम से भगवान describe कहते हैं कि Ashtanga Yoga, Raj Yoga in the sixth chapter. आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मन निराशी और अपरिग्रह, ये शब्द का प्रयोग वहां भी किया है, निराशी Here, there also he has used the और same word, Nirashir and Aparigraha, तो ये चाहे Yatachitta. कर्मयोग है, So चाहे whether it is Karma ज्ञान Yoga or योग है, Raj Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, सब जगह everywhere वास्तविकता में भावनाएं इसी in प्रकार की reality, होनी है, mentality should be like this इसी only. भाव से हमको With कार्य this करना है, mentality, we should work. और तभी हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और And तभी only हम then can चैतन्य we become चेतना liberated from the bondage of स्वरूप karma आत्मा, and जो experience हमारी the सारी spiritual substance. हमारी Because if our सारी entire चित्त bhavana, वृत्तियाँ all our chitta vritti, केवल भौतिक वस्तुओं में ही व्यापृत रहेंगी, उसी में लगी if they रहेंगी, are always immersed only in तो material हमारे चित्त जो objects, है वो then our भगवान में chitta, कैसे लगेंगे। how can it focus on अस्माभिष्ट Bhagavan? देवस्य कृष्णा भक्ति सुदूरता, जो चित्त जो है वो विषय में आविष्ट है, The chitta that is immersed भक्ति in कहाँ से आएगी। sense objects, how can it तो have उसको bhakti for त्याग Bhagavan? करना पड़ेगा ना उसको, लेकिन
इसका So you मतलब have ये नहीं to है कि make it empty संसार for छोड़ Bhagavan. के हमको कहीं और जाना है, हमको जंगल But में this doesn't mean that we have to give up everything and go to the Himalayas or in some forest or sit रहने का inside some साधन say नहीं है। cave. Because wherever you go, you are living in the ऐसा material world मनुष्य only. But you have to जो live उसमें in a बंधन way ना हो, that you do not ऐसा become implicated यही अर्थ है in this इसका। bondage of karma by निवृत्ति you have to परायण remain detached. तो यहाँ ये निवृत्ति परायण कर्मयोगी है, यानी कि जो कर्मयोगी ज़्यादा कार्यों में So अपने आप here को नहीं he's लगाएगा, talking about a nivritti जितना parayan karma yogi, कार्य means one करना है who उतना उसमें पुरुषार्थ performs करता है। only that much karma that is required for maintenance of his body. तो वैसे होता है कि शरीर से कर्म करता है, तो Shariram karma शरीर here में लग means जाता that है he does karma with his body. कर्म So all करने में, karmas are done with his दूसरे with body only. इंद्रियों से होते हैं, मन से होते हैं। तो शारीरम Karmas are done by body शरीर senses. So निर्वाहमात्रा के लिए Shariram karma वो means कर्म करता he है, does karma just for और maintenance of body. बाकी उससे ज़्यादा वो कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, अपना बाकी He समय does not become more attached भगवत to सेवा the में ही karma. देता है, चाहे वो He नाम जपने में हो, engages his remaining time विग्रह in की seva पूजा of में हो, Bhagavan, whether it is शास्त्र Nam का Jap अध्ययन or में, seva of यानी Vigraha कि अपना or शरीर से reflecting on पहले Shastra, meaning वो that सेवा he में देता है। gives maximum time in seva, और शरीर के लिए उतना ही काम करता है and for जितना body he उसके निर्वाह में हो। works only that much which is sufficient for his तो इसको हम bodily साधक maintenance. को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम में So a इतने sadhak व्यस्त should रहते also हैं कि think अपने about that. शरीरों के लिए Many समय नहीं times it निकाल happens पाते, that we become so much absorbed in our work that we do not have सारा time दिन for our sadhana. कर्म में लगे रहें, तो Day फिर and night सोचते we हैं are कि क्या just busy वास्तव in में work. इतनी मेरे को So we आवश्यकता should है, think that do I या मैं actually अपनी need आवश्यकताओं को so कम कर much? सकता हूँ। Can I reduce my needs? कुछ ऐसा होता है कि दूसरे लोगों का जो स्तर है जीवन शैली का, It also उसको देख के happens हमको भी इसी that we प्रकार करना want to चाहिए, copy others' अपना lifestyle. जीवन होना We चाहिए, should also have big home, big car, costly हम भी car. उसी प्रकार के We should वस्त्र पहने, also उसकी we तुलना में wear करते हैं, same तभी वो costly clothes. So then for that you समाधान will की have to ओर work very hard, बढ़ते हैं। but that will not lead to इसलिए any अपनी spiritual आवश्यकताओं को advancement. नियमित करके रखें, So to keep the इसी को हम necessities कहते हैं limited, न्यूनम केवलम कर्म, क्योंकि जितनी हम अपनी आवश्यकताओं को नियमित करके रखेंगे, because तो the more we limit उतना our अधिक समय प्राप्त necessities, होगा the we will get more and more time भक्ति के लिए। for advancing तो on इसलिए the संसार spiritual को हम path. अवसर So देते हैं, that is what Bhagavan is advising लेकिन here. इसका मतलब ये भी नहीं है कि But हम this आलसी हो also जाएं does not mean that और we नियत कर्म become ही करते lazy. रहें, Bhagavan is ये saying that नहीं work only सोते that रहो, much. बैठ के So टीवी that देखते doesn't रहो, mean that in the other time you just लेटे sit, रहो। watch cricket match, तो इसके लिए नहीं television. कह रहे हैं यहाँ, That is not Bhagavan मनुष्य के लिए is नहीं कह what रहे हैं Bhagavan is advising here. कि He is तुम not आत्मा advising to नहीं है कि become कर्म lazy निषिद्ध कर्म में करो। or you आलस्य do और प्रमाद nishidha forbidden कर्म की karma. काल नहीं है, So alas and अपनी pramad, शारीरिक laziness आवश्यकताओं and को कम करके engaging in nishidha karma, this is not prescribed, but rather doing working for bodily maintenance with limited necessities and giving remaining time in sadhana, तो उसमें जितना समय हम निकाल सकते हैं उतना अच्छा है। because human form of life उसमें has been ज्ञान given से for जब that व्यक्ति कर्म purpose करता only. है तो So the more ज्ञान we give लाभ time for that, the better it is. तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर पाप में लिप्त नहीं So होता है, such a person, then he does not become implicated in तो पाप का sinful मतलब है कि कर्म reactions. के बंधन में नहीं So here फंसता है, papa कर्म के means he बंधन does में not become implicated उसको in दुख karma bandhan, in bondage of karma. ऐसी Sin स्थिति means suffering, दुख मिले, a state ऐसा that क्रियाएं will करके give दुख us में आने से suffering निवृत्त or हो, activities that तो इसलिए वो कहते हैं bring कि ऐसा तो suffering. फिर So इस Bhagavan प्रकार का says कर्म बंधन that नहीं होता है, वो कर्म such a से मुक्त person, होता है। then he will not have bondage to पहले karma. कहा था He ज्ञानम remains free प्रमादम, from इसलिए bondage. ज्ञान की अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बताया है कि वो कर्म करते हुए किस प्रकार से उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे उनका बंधन नहीं होता। और फिर इसी को थोड़ा और आगे बताएंगे वो।
So later he will इस expand प्रकार से व्यक्ति more on this, that how बंधन से मुक्त होता है person remains free तो from bondage to क्वेश्चन का karma. सुनेंगे आगे So we will इसलिए इसका learn that in the next class. प्रश्न Today we पूछ will सकते stop here, and if you have any question, you can ask. बाबाजी मेरा एक प्रश्न है, हम अपनी कामनाओं तथा उसके फल से Question. इतने Uh, अभिभूत हो जाते हैं we become so कि much हम कभी absorbed समय in our समय पर desires परम and their पद को results that while performing प्राप्त actions, we don't even think कैसे हम about सच्चाई से the अवगत potential results. हैं So, जब भी मन how, में कामना आती what to है do? So, answer, whatever तो पहले desires ही उसको you भी यही विचार get, करना है first of कि all, इस you कामना का should deliberate on ये that, मेरे मुख्य that उद्देश्य से संबंध है is the fulfillment of this desire मुख्य connected उद्देश्य है with the main goal of my उससे life. संबंधित है क्या उस मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है या इसके Is it विरुद्ध है helpful in fulfillment तो of ये my, जब तक आप in achievement of my goal, इसको नहीं the विचार main करेंगे goal of तब life? तक आप कामनाओं के चक्कर में Unless पड़े रहेंगे you deliberate on this, इसलिए you will remain implicated in the आपको अपना network of the उद्देश्य desires. स्पष्ट होना चाहिए That's why it is very और important आपको that you अपने should be very उद्देश्य clear को about the goal of your life. तो उससे And पहले then ही आप whatever you अपने do, मुख्य उद्देश्य में then you check, सहायता कर रहा है या मेरे is पीछे it पड़ रहा है helping me in attaining ये my उसका goal, or it is taking me away from my goal? पद्धति है उसका चेक करने का तरीका This is the checking method. गौर जी का प्रश्न है, जब Question. मैं जीवन में When I आध्यात्मिक want to आदर्शों को follow अपनाने के a लिए basic हर किसी spiritual को attitude in life, अपनाने के लिए despite as a अपने grihastha, there are some worldly things to maintain life for family. आसक्ति से How छुटकारा can I कैसे पा become सकते free हैं of attachment to the और fruits of action कर्म परिणाम के when लिए they are the कैसे reason नहीं for उसके doing the परिणाम के लिए action? कर रहे हैं लेकिन उनमें आसक्ति मत Answer. कीजिए Yeah, you are working for आसक्ति result, करने but you पे should वो not be होता है attached to the result. तो आपको Being बहुत not being attached means when you get the result, you should not be very excited, and when you don't get it, इसलिए you should आपको not plunge जैसा into आपने suffering. दी आपको मिल गया जैसा You आपने had a दी requirement, you had a need, and you got कोई it. बहुत बड़ा धन Like I gave the example प्राप्त for करने blank का bank फल नहीं clerk. होता है उसके लिए जो साधारण है तो ये आसक्ति So when a customer brings lot of money to deposit, the bank clerk is not कर्म फल elated. का है ना पहले So this attachment is what we have to give कर्माशय up. कर्म फल में संग माने आसक्ति का त्याग करना So anasanga means to give up तो the उसने attachment. थोड़ी कहा कर्म फल का त्याग करो Did he say that you give up the कर्म फल result? आसंग He said that tyaktva karma phala asanga. That's what he is explaining. He is not talking about giving up the result. He is talking about giving up the attachment to the जैसे result. कि Question. In verse श्लोक in 4.20 श्लोक में आसक्ति के लिए प्रयोग किया गया in शब्द verse 4.20, जो the कि word for attachment asanga seems to be a ऐसा double क्या negative, है जो not attached. Does sanga give the same meaning as asanga? संपूर्ण रूप से संग So here a means complete. जैसे शक्ति और आसक्ति Like you दो say राग sakti and असंग है asakti. One is शक्ति asakti. और असंग ये विपरीत अर्थक है संग असंग और आसंग Sanga, संग मतलब asanga, and asanga. सक्त होना Sanga means असंग का मतलब to उसमें be आसक्त ना होना और आसंग का मतलब पूर्ण connected, रूप से attached. Asanga means not attached, and asanga means completely attached. ठीक है प्रार्थना श्लोक हाँ मेरा एक और प्रश्न है बाबा जी कि So, मैं किसी भी question दैनिक कार्य को करते that हुए whenever I स्वयं perform some daily से duty, पराजित होने में खुद को कठिनाई महसूस करती हूँ I feel खाना difficult पीने खाते समय to केवल खाने put में my ध्यान mind fully into that activity, ऐसा like क्या है while जिससे eating, दैनिक दिनचर्या करते समय मन को उस focus, एकाग्रता में awareness. नियुक्त किया जा सके Is there any कोई नहीं है उसका mantra by which I अभ्यास can ही है बस focus my mind fully on whatever I'm doing? Answer: there is no mantra. It is just about वैराग्य practice. कौनते वैराग्य ने चक्रिय It is just about practice. उसका तरीका केवल अभ्यास ही है It is just practice. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें Dhanyavad Pranam Babaji, thanks for a wonderful class. I'm just coming back to this concept of Atma Sakshatkar, where we have to become fully aware and be absorbed in the self. And
The reason I'm talking about this is in our pursuit for pleasure or happiness, we've always trying to relate with matter, which is not of the same nature as the self, and therefore it has no ability to satisfy the self. And time again, after engaging with it, we realize that actually the desire for it dissipates, and that's the actual pleasure we're getting. And the amount of time we've interacted with matter is equal to the time we've been disappointed with it. That means every time we get relief from the desire from it, that's the time we come in contact with the Atma. So my question is, if the Atma, if we've experienced it equally amount of times, how come the attraction for the Atma doesn't grow as much as for the attraction for matter still stays in it? And the second part to that is, you said it's manyata, meaning with your mind, you've accepted it. In your mind, you're relishing it. So now we understand the mind is also outside of the Atma. So then relishment of the Atma can only exist with the mind, and mind is also for temporary nature. So how do we reconcile and understand this concept? तो उनका प्रश्न ये है कि So the question is that when किसी चीज की इच्छा होती है, we have desire for something, वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, we obtain that object, हमको कुछ खुशी then प्राप्त होती है, और we खुशी experience some वास्तविक happiness, but actually that happiness is not by that object, but because that desire has gone away, and we have some feeling of Atma. So his question is that the way we have attraction towards sense objects, why not towards Atma? So the main reason is avidya, इस प्रकार से व्याख्या की ignorance. है तो आपने समझा है, So as I have explained, ऐसा हमारा अनुभव तो नहीं है ना I have explained, but we do not have कि experience ये जो of that. सुख हमको Due to प्राप्त होता है, avidya, जो खुशी we हमको think होती that है, whatever विशेष रूप happiness से we are getting, क्योंकि हम it ऐसा is सोचते by हैं those sense कि objects, हमारी the आवश्यकता vishayas. उसी में ही होती And है, because we think like that, इसलिए हम our कहते हैं attachment is in the sense objects only, इस पर not in हम the विचार Atma. करते नहीं है ना कि We वास्तविक do सुख not हमको think about that, आनंद या खुशी that हमको मिलती है, वास्तव this में happiness कहाँ से that we आती are है, experiencing, इसका from where are we getting it? सोर्स है, इसका स्रोत क्या है, उस पर हम विचार करते नहीं है, और अज्ञान We do में not think about हम that, सोचते हैं कि and due खुशी to से ignorance we think that it is that इसका happiness स्वभाव is है, coming from the sense objects only. क्योंकि ऐसा आप विचार ही नहीं करते हैं। So you never deliberate और दूसरा that you get क्या happiness था, from उसको the फिर से Atma. स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट नहीं हुआ था दूसरा क्या And प्रश्न। the second question what you said I didn't understand. That means it's with the mind we think that this object can give me pleasure, and then when the desire for it dissipates, then we get contact with the Atma or the relief or the Atma Anand. So even to appreciate the Atma, there is the mind, and we understand that the mind is separate from the Atma. So how are we supposed to reconcile that relationship? तो ये जितना भी आपको अनुभव होता है So अभी वो सब whatever you experience, it is all in the mind only. का अनुभव, आत्मा का साक्षात्कार हो, Whether it is self चाहे वो आध्यात्मिक साक्षात्कार हो, realization of Atma or Bhagavan or उसका माध्यम क्या है, material objects, the medium is mind only. इसको समझना पड़ेगा। So you have to understand जिसको this. जो भी अनुभव होता है, चाहे वो Whatever भौतिक अनुभव है one या आध्यात्मिक अनुभव experiences, है, material or वो मन spiritual, में ही होता है। that experience happens in आध्यात्मिक mind सुख only. हो Whether it चाहे is of भौतिक सुख external हो, objects मन or लगा के समाधि करो, internal or उसमें भी samadhi in dhyana, मन ही रहता है। मन so की mind only एकाग्रता is there. समाप्त करने से जो कहते हैं कि अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो So you say that you become situated in the self. So there also whatever he is experiencing in self-realization, it is through mind only. There is no other way. या फिर वो अपने आप में मन से अगर Otherwise, छोड़ के बैठेगा तो उसको अपने आप में if रहेगा, he उसको अनुभव नहीं disconnects होगा। from mind जैसे and आपको सुख की अवस्था situates में himself in the समाधि Atma, में he will be समाधि situated, में but he will बैठते not हैं, experience anything. आपको अपना अनुभव होता है, लेकिन उस समय आप कहते नहीं है कि मेरे को मेरा अपना अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसमें समय मन से भी संपर्क हट जाता So है, that time in deep sleep, you are disconnected from the mind also, इसलिए बाद में स्मृति and आती है you have कि इस samskaras प्रकार से सोया। in the chitta. You remember that you slept happily. गुस्तावो जी का प्रश्न है कि क्या परिणामों से अनासक्त होना भौतिक भावना नहीं है,
यदि ऐसा है तो एक भौतिक इच्छा जीव को कैसे लाभान्वित करती है? तो परिणामों से अनासक्त होना भौतिक कैसे है? इसमें भौतिकता क्या है? So, isn't detachment from results merely a material emotion? If so, how can a material emotion benefit the यदि ऐसा jiva? है तो जीव को भौतिक इच्छा कैसे लाभान्वित करती है? भौतिक नहीं है वो। That is not material. प्रणव जी का प्रश्न है कि सरकारी Question: while working in government service where targets are everything, how to get rid of results? परिणामों से छुटकारा की मैंने वही बात कहा ना, वो परिणाम से So, as I आसक्ति said, नहीं, that you will get the results, परिणाम में आसक्ति नहीं रखनी है, but भगवान you should not have attachment to the result. That's what Bhagavan is saying. थोड़ी कहने के तब तो कर्म फल Is he saying that मतलब परिणाम, give up the हम ये कह रहे हैं, result? कर्म का परिणाम कर्म का फल, तो उसमें आसंग की बात कर रहे हो। There he is talking about attachment. Give up the attachment. मोहिनी जी का प्रश्न है कि आपने Question: समझाया कि मन you सोचता है कि explained जीवन that संसार में अन्य जीवों mind को thinks तो that whole लेकिन मन तो सोचता life है I कि have मनुष्य been जीवन जीवन को absorbed in something, but mind is material. Mind cannot think. उसमें शक्ति आती है, चेतनता शक्ति, जैसे बल्ब जो है So thinking means प्रकाश it नहीं gets देता है, लेकिन जो उसमें power बिजली by the atma. तो वो प्रकाश देता है। Gets the power gets infused by the atma. Similarly, mind also like चेतनता का प्रवाह the जो bulb. होता है, So mind is material, but when there is the power of spiritual energy from atma, then it works. धन्यवाद प्रणाम बाबूजी महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे 4:21 में समझाया कि जब एक व्यक्ति को तब उसकी स्थिति ऐसी रखनी चाहिए कि जीवन निर्वाह के So as लिए you उसे explained धन की that आवश्यकता the है, तो person's situation मान लीजिए should किसी be की ऐसी such स्थिति that है his या उसके basic needs मानसिक are रूप से fulfilled. कमजोर हो रही हैं, So suppose तो a उसको person is in such a सरकार से कोई situation पद ऑफर किया जाता है, and तो ऐसे में then उसे वो पद the ग्रहण government करना gives him चाहिए some position, some उसको offer of some सोचना चाहिए कि position. इस पद से मुझे Then लेकर while accepting the कैसे position, what should he think? Should he think that I am accepting it for some तो social उसकी मानसिक service or स्थिति के whatever? ऊपर है कि वो किस So पद answer, के लिए it depends on his पहले भी कहा था mental कि वो state. Why is he क्रिया taking? होती है, As I told earlier, दूसरा उसके पीछे भाव होता है, that there is behind क्या है karma, वो there जो is the भाव है, activity and there is the bhava. And out भाव क्या among है these two, उसके bhava is the main thing. उसके ऊपर So निर्भर it करता है। depends on what is your bhava motive behind that. क्रिया तो It doesn't depend only डॉक्टर on the kriya. ऑपरेशन करता है, वो भी काटता है, चीरता है The शरीर को, doctor is doing surgery, he is also cutting the कोई body with हत्याचारी है वो भी किसी के शरीर को चाकू से काटता है, the लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है ना, तो वही of क्रिया उसका knife, परिणाम and अलग अलग है। some thief or murderer, he is also भावना के ऊपर है। attacking the body with some sharp object. So it depends on the bhava, कर्म बंधन से मुक्त why होना one is doing that. है ऐसी So स्थिति में, if तो somebody उसे क्या if this person has to become नहीं, free उसको यही from सोचना है कि the bondage मैं to कुछ नहीं karma, ले रहा हूँ, what should he think? आपके So यहाँ so भगवत गीता में ज्ञान here की that सारी such बातें person has हैं, to think that why am I accepting this सब position? आप में होती है, Because here in Gita, Bhagavan is उसको telling यही सोचना है कि मैं किस लिए ग्रहण कर रहा हूँ। आपको कोई कुछ भी ऑफर करे, anybody can offer आपको you क्या बोलना anything. है, If my मुझे stomach कुछ is नहीं चाहिए, full, कोई आकर मेरे को गुलाब जामुन दे I दे तो don't मैं खा लूंगा, need food. If somebody brings gulab jamun, should I eat that? But because I don't need. तो अगर आपका उद्देश्य आध्यात्मिक है, So if your goal is स्पिरिचुअलिटी है, spiritual and if your तो आप needs सरकार are को ऑफर fulfilled, या बेसरकार को then ऑफर करें, government offers or आपको ये anybody else सोचना है कि मैं offers, इसको then you लूंगा should think that और इससे why मेरे should I उद्देश्य का accept it क्या लाभ होगा, and how will it help ये me पहले in आपको अपने fulfillment आप of को my goal. समझाना है। That's what I कार्य said. करने का यही है In कि before doing any उद्देश्य activity, क्या first है, of all, you have to उसके check प्रति कैसे that आगे while बढ़ेंगे, अपने by उद्देश्य doing की this ओर। activity am I moving towards तो आपको निर्णय achieving my करना है goal कि or I आपका am उद्देश्य क्या going है जीवन का, becoming deviated from my goal. इससे आपको क्या So that is प्राप्त what होगा, you have to think, that why you want that position, will आगे that बढ़ रहे हैं तो help नारा you लगा रहे हैं, in इस चीज का कोई लाभ achieving नहीं your है, goal, or it has nothing to do with that, or is it creating an obstacle in that? तो This is what you परिणाम have क्या to है। decide. This is where you have to use your intelligence. This is where knowledge is required.
का प्रश्न है कि तो जब Question: के समय मैं नाम during नहीं japa, होना चाहता, ये सोच वास्तव में कौन करता है? so during japa, when the thought comes that I do not want to be absorbed in japa, who thinks that? So your mind only thinks. Who else is thinking? Is somebody coming from outside to ये think or समझ के what? देखिए कि इस समय आपकी जो स्थिति है ना, ये एक You have to understand समझाने के लिए that कहा जाता है कि आत्मा अलग है, that currently, और एक अलग for आत्मा explaining, स्थिति it is ऐसी said हो that सकती atma है is जो different, बाहर की ओर से mind is different. But in our current situation, it is not that atma is sitting separately, mind is separately. Currently, both are like joined together. दूध में मैं पानी मिला दूं, Like there is milk, there is water. Now if I mix water in milk, now if I tell you that this contains milk and water, but as of now both are mixed. So when I am tasting, am I tasting milk or water? Both are mixed. लेकिन वो समझाने के लिए कहा जाता है कि But to जिसमें दूध है explain, उसमें it is पानी said मिला that there is milk also, there is हमारी water स्थिति also. ऐसी है। So our situation is like बार बार this. किए जाते हैं कि ये कौन सोचता है, कहाँ जो So these type of questions are raised again and again, that who हमारी thinks. स्थिति ऐसी है कि दूध और पानी Our situation is like milk and water mixed. वास्तव में दूध पानी मिलते नहीं है, दूध दूध ही रहता, पानी पानी Actually, they cannot be mixed. Milk is milk, water is water. Milk cannot become water, water cannot become milk. Molecules of milk will always remain molecules of milk, and molecules of water will always remain molecules of water only. But to us, they appear like same only. Similarly, Atma and Sharir, they cannot become one, but currently they are joined in such a way it appears as one only. Now they are asking that who thinks, who tells. What can you say? Both are together only. दूध को चखते हैं जिसमें पानी मिला हुआ है, तो अब दोनों को ही चख रहे हैं। When you are tasting that adulterated milk, so you are tasting both milk and water. यूट्यूब से प्रश्न है कि कृष्ण ने द्वारिका क्यों बनाई? भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान बुद्ध ने Question: Why did Krishna make Dwarka? इन दोनों ने कामनाएं त्याग दी, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं। Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu and Buddha, he gave up desire, but Krishna made Dwarka. So how do you know that Krishna, who says that he had desire? We just 3 or 4 verses back only we studied in Gita. कि मेरी कर्म फल में स्प्रिया नहीं है, He said that he does not have desire in karma phala. So then what praman do you have? भगवान ने तो स्पष्ट कहा था श्लोक नंबर 14 में, In the 14th verse, कर्माणि he said, कर्म फले स्प्रिया इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न से बन्ध्यते। ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।